मैं फिर से चली आई हूँ आपका ही चैनल जिसका नाम है पूजा स्टेनोग्राफी एकेडमी पर। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा रखती हूँ आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ हो। तो आप लोगों के प्यार और रिक्वेस्ट की वजह से मैं फिर से एक लीगल डिक्टेशन लेके आई हूँ। आशा रखती हूँ ये आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ये डिक्टेशन लेने के बाद आपको कोई आउटलाइन लिखने में अगर प्रॉब्लम हो तो कोई बात नहीं, आपको टेंशन करने की कोई बात नहीं। आउटलाइन की पिक्चर्स वीडियो में दिया हुआ है, आप ऐसे भी वीडियो में चेक करते हुए लिख सकते हैं आउटलाइन को। मैं आशा रखती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगे। मैं प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी लोगों के लिए। मैं बेंगोली हूँ, मैं त्रिपुरा से बिलोंग करती हूँ, फिर भी आप लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से मैं हिंदी में वीडियो लेके आई हूँ, लीगल डिक्टेशन लेके आई हूँ। प्लीज़ मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों के लिए, प्लीज़ मेरे चैनल को और आप लोगों के चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। पूजा स्टेनोग्राफी एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सिंध हाई कोर्ट जजमेंट डेटेड 24/07/2020 Part 2 Para 1 It has been argued by the learned counsel for the petitioners that from perusal of definition of the term salary given under section 12 of the Income Tax Ordinance 2001 and bare reading of entry number 39 as referred to herein above, it is clear that exclusion provided under section 12 (2) of the Income Tax Ordinance legislature not to conclude the aforesaid judicial allowance and special judicial allowance in the salary for the purposes of charging tax thereon. Therefore, according to learned counsel for the petitioners, withholding of amount of income tax by treating the judicial allowance and special judicial allowance as part of taxable salary income is illegal and without lawful authority. Para 2 In support of their contention, learned counsel for the petitioners have placed reliance in the recent judgments of Peshawar High Court in the case of Muhammad Asif and other versus Federation of Pakistan and others 2018 PTD 806 as well as judgment of the Lahore High Court in the case of Syed Shabir Shah versus Federation of Pakistan and others in WP number 243868 2018, whereby according to learned counsel for the petitioners, it has been held that deduction of income tax on the judicial allowance and special judicial allowance from the salary of the members of district judiciary and members of establishment of Lahore High Court and Peshawar High Court is illegal and without lawful authority. Para 3 Conversely, learned counsel for the respondent
has opposed the above contention of the learned counsel for the petitioner and submitted that every income is chargeable to tax unless exempted. According to learned counsel for the respondent, keeping in view the exhaustive definition of the term salary given under section 12 of the Income Tax Ordinance 2001, it is clear that all the benefits and the allowance are part of salary income, therefore rightly subjected to withholding of income tax by Accountant General of Sindh. It has been further argued by learned counsel for the respondent that claim of exemption of both these allowances is not available under the second schedule to the Income Tax Ordinance 2001, whereas burden is upon petitioners to prove that such amount is exclusively used and spent for the performance of their duties.